Hey, so good red closing for me. System trade in the morning gave shots. First this was hit, and then again it gave shots. Then this was hit again. So yeah, a good red closing. Now for tomorrow, I did not really have a plan in the morning for 1 hour. This is an inside bar, so I'll trade this if there's not a big gap up or a gap down. System trade did not trigger. What was the trade? I gave this trade in Bank Nifty today. Basically, if 2 is above VWAP, I look for a sell below 215. 2 was not above VWAP, so this did not trigger. Now what am I looking for is no volumes again, only good volumes in Nifty on the first candle, but then it was really sad. So where is Nifty right now? It is in that yellow box. If you watch my post market, you'll know what the yellow box is. So your Nifty's so what I want is for it to break 720 and not break 760. If that happens till 12 close tomorrow first half, I'll look for selling opportunities, keeping this as stop loss. थैंक यू. मैं अच्छा खासा रेड पे क्लोज हूँ आज, क्योंकि दोनों सिस्टम ट्रेड मेरे सुबह का एक सिस्टम ट्रेड आया था, 2 बेसिकली. इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर एक ट्रिगर हो गया वापस जब ये VWAP आया, फिर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ. बेसिकली ये जो ये अप मूव आया, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डाउन मूव की तरफ चलेगा. क्या प्लान था सुबह? कुछ भी नहीं. अब कल क्या प्लान है? इनसाइड बार है, तो मैं अगर गैप अप ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं हुआ और गैप डाउन नहीं हुआ तो मैं इसको सेल या बाय करूँगा इसके ट्रिगर पे. बैंक निफ्टी में जो सिस्टम ट्रेड दिया था मैंने, वो ट्रिगर नहीं हुआ. ट्रेड ये था कि 2 o'clock VWAP के ऊपर क्लोज़ होगा तो मैं 250 के नीचे बेचूँगा. क्लोज़ नहीं हुआ ये. निफ्टी में अगर कल फर्स्ट हाफ में 720 टूटता है और 760 नहीं टूटता तो मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखूँगा 760 स्टॉप लॉस रख के. थैंक यू.